That is 7. Bloody hell. हेलो वेलकम एवरीबॉडी टू द वीडियो। आज हमारे पास बहुत ही एक स्पेशल इंसान है, मिस्टर बॉबी देओल। हाउ यू डूइंग? Good. How are you doing, man? आई एम गुड। इट्स सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच टू अग्रीइंग टू डू दिस। No, I've watched your show and it was fun watching it. So I want to be a part of that fun. So अरे let's. फैंटास्टिक। मैं बताना चाहता हूँ 90s, ग्रोइंग अप इन द 90s मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज देखी थी। देयर वाज अ फेज ऑफ गुप्त, सोल्जर, बिच्छू, थ्री जस्ट फैंटास्टिक मूवीज दैट केम बैक टू बैक। आई थिंक गुप्त एक ऐसी मूवी बन गई थी इन माय फ्रेंड सर्कल। मेरे 2 लोगों ने देखी थी, 6 लोग और थे। हमने सबको पहले ही बता दिया था कि काजोल किलर है, फिर भी सबने जाके देखी एंड एवरीबॉडी स्टिल एंजॉयड इट। इट्स I वन know. ऑफ दोस। Thankfully, there were no mobile phones out then, so रोज नहीं देयर तो वुड हैव बीन अ ट्वीट। पहले आया था. Twitter पे पहले आ जाता. That's true. But now you've progressed. Now you've reached web series also. People can watch you sitting in their homes. How does that feel to you? I think it feels amazing. I think Ashram has been loved by millions and millions of people, and it gives me so much of happiness. जो आपका कैरेक्टर है इसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यूजुअली आइदर यू विल प्ले अ हीरो या विलन। इसमें थोड़ा ग्रे एरिया, यू आर प्लेइंग अ बिट ऑफ बोथ। Well, I think it's first time I'm playing such a dark character. I've never played anything so dark. I mean, there's nothing gray about my character. You know, eventually the dark side, when you see, that's what he is all about in chapter 2. I'm totally black. You're totally black. Just like the color of my shirt. ठीक है, तो मेरे सामने let's get into this. मेरे सामने एक थोड़ा बोर्ड टाइप का पड़ा है, that will be kind of important in a few minutes. और मेरे पीछे एक the cupboard के अंदर there's a yellowish envelope जो फंसा It's हुआ just है with a question question mark. mark on it. हाँ, क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। दैट विल बी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द एंड। एज जो आप गॉडमैन प्ले कर रहे हो इन इट, यू हैव अ स्किल ऑफ इमोशनली मैनिपुलेटिंग पीपल इनटू बिलीविंग इनटू यू इन द सीरीज। वैसे ही जैसे आपने मेरा शो देखा था और कुछ कुछ चीजें मैं करता हूँ, आई कैन मेंटली मैनिपुलेट पीपल इनटू डूइंग अ फ्यू थिंग्स। तो मुझे देखना है, कैन आई I do it in fiction. I do it in real life. That's true. I'm doing it in real life, but without any black. I try to keep it as entertaining as possible. तो जो मैं आपके साथ ट्राई करना चाहता हूँ इज समथिंग दैट आई हैव बीन फैसिनेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें कोई पावर्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे बस देखना है आप किस लेवल तक मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ। तो व्हाट आई हैव हियर, देयर इज दिस ब्लैक थिंग विद 5 डिफरेंट स्लॉट्स। मेरे पास ये भी है, मेरे पास 5 टैरो कार्ड्स हैं। देयर इज वन दैट सेज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक है द हाई प्रीस्टेस। आई एम श्योर एट सम पॉइंट आपने कहीं ना कहीं टैरो कार्ड्स नहीं, देखे मैंने होंगे। कभी नहीं देखे tarot cards. कहीं मतलब आई एम श्योर इफ even if you had had a reading, of course you know about tarots. No, I know about tarot cards, हाँ. but I've never been to a tarot card reader. You've I never don't been to a tarot believe card in reader. any of these things. Oh, you don't believe in any of those. So you're on the same page. I don't believe in any of these things either. But I think interesting होगा to see what we can do with them. वैसे ही Yeah. 5 है मेरे पास. One says magician, one says fool, and one says devil, which I think is going with the That's the character that you're playing. That's the Baba. ठीक है. What we're going to do, one by one, I'm going to pick up these cards and you're going to choose which card goes where. That's going to be your completely free choice. And hopefully we'll be able to get it in a specific order, which I think I'll be manipulating you into. Let's see if we can do that. Okay. The first card, where do you think this should go? Position 1, 2, 3, 3. 4, 3. Okay. Even before I ended, you reached 3. Okay, let's push it there. Position number 3 पे ये चला जाता है. Next card again, you don't know which one this is. 1, 2, 4 or 5. 1. 1. Did you change your mind or did you have one that was the first number that came? It was the first number that came. It was the first number that came. Okay, that goes here. Where does this one go? 2, 4 or 5? 4. 4. Excellent. अब मेरे पास 2 कार्ड बचे हैं. Position number 2 and position number 5 are left. Your choice. लेफ्ट हाथ पहले रखना है कि राइट हाथ पहले रखना है? Left हाथ. लेफ्ट हाथ. ठीक है, तो लेफ्ट हाथ 2 पे जाएगा या 5 पे? 2 पे. 2 पे. ठीक है, so this goes here and finally this one goes here. Would you agree, Bobby, that आपकी completely free choices थी? आप कोई भी कार्ड कहीं पे रख सकते थे. एक दो बार मेरे बोलने से पहले ही आपने डिसाइड करा होता कौन सा कार्ड कहाँ जाने वाला है. Correct? मेरी चॉइस थी, मैंने बताया कहाँ रखने को. हाँ, और हमने कुछ पहले बात नहीं करी थी, हमने कुछ सेटअप नहीं करा था. These were all free choices. Yes, they're all free choices. This is the order that you kept the cards in. आपको पता भी नहीं कौन सा कार्ड कहाँ पे. अभी मुझे भी नहीं पता शायद कौन सा कार्ड कहाँ पे. Both of us will take a look together to see कि आपने कौन सा कार्ड कहाँ रखा है. The first one you've kept is the Fool. That's the first card that has come. The Fool, yeah. The Fool. Okay. First one is position 1 is Fool. Second one is the High Priestess, which is how my mother's name is saved on my phone. The High Priestess.
That's number 2. The third one is the Wheel of Fortune. That's what you've kept there. Number 4 is me, the magician. Yes, the That's what you magician. have. Finally, that leaves the Baba. Number 5 pe, the devil. Yes. Now, like you said, you had free choices of कौन सा कार्ड कहाँ जाने वाला है. आपकी decision थी कौन कब कहाँ रखना है. I didn't influence you. You chose the order of Fool, High Priestess, Wheel of Fortune, Magician and Devil. आपके साथ शूट करने से पहले मैंने आपकी काफी सारे पुराना वर्क भी देखा. मैंने आश्रम का सीजन 1 भी देखा. आई सॉ सम ऑफ योर इंटरव्यूज जस्ट टू ट्राई टू गेट एन आइडिया कि आप कैसे सोचोगे और मैं आपको किस तरह से मैनिपुलेट कर पाऊंगा. एंड आई मेड अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेडिक्शन. वो प्रेडिक्शन मैंने लिखी कल रात को. आई सील्ड इट इन एन एनवेलप एंड दैट एनवेलप हैज बीन हैंगिंग बिहाइंड मी सिंस देन. आई वांट टू शो दिस टू यू. इसके अंदर there's a piece of paper, there's only one जो मैंने लिखा था. And I thought कि आप क्या करोगे. आपने सबसे पहले पोजीशन पे रखा the fool, and the prediction I made कि आप सबसे पहले पोजीशन पे रखोगे the fool. Next was the high priestess, which is exactly what I thought as well. Then you had the wheel of fortune. Then it was me, the magician, leaving the Baba, the devil, in the last position. Exactly as you wanted. I know, man. It's amazing, man. Thank you. Thank you so much. So ऐसा ही I think आप लोगों को manipulate करने वाले हो in the show also, which I think people are very excited to see. Are you excited for people to see it as well? Yes, I am excited, man. It's fun. I love all this stuff. I like to watch this kind of stuff. So it's going to be exciting being a part of it. Arey, I'm glad. I can't wait for people to see the video also. People are obviously seeing it as we talk. Thank you so much for being a part of this. All of you on MX Player, free to watch है आश्रम. Chapter 2 आ गया है. Please जाके देखो. बहुत ज़्यादा amazing है. Season 1 बहुत सही था. Season 2 dark होता चला जा रहा है, which is my genre of entertainment, and I can't wait to see it. आप सब भी जाके देखो. And Bobby sir, do you want to tell them to subscribe to the channel? Subscribe to Karan Singh Magic. It's most entertaining show I've seen after a long time, and it's as entertaining as Ashram. Chapter. Thank you so much. I can't wait to see it myself, and best of luck for it, sir. Thanks, man. Keep it up, and all the best to you, man. Thank you so much. Take care. Jap naam. Now. This is a perfect ending. Thank you so much for watching, guys. Make sure you like the video. Let's try 30,000 likes हो जाए इस वीडियो पे, क्योंकि बहुत मजा आया मुझे ये वीडियो बनाने में. Mr. Bobby Deol was so cool. इतनी फील है उनके साथ conversation करने में, and to make this video with him. And go show him some love as well. Make sure you go check out Ashram on MX Player. It is out now, completely free of charge. Go check it out. Subscribe to my channel. Let's try to hit 500,000 subscribers साल के end तक. मजा ही आ जाएगा यार, हो गए तो. Also, Karan Singh Magic returns with his live show after 8 months of lockdown. 21st November ko I am performing in New Delhi, Akshara Amphitheatre, full social distancing norms, open air mind reading show. We will make sure everything is safe and sound. Ticket link is in the description. aa jao, bahut jaldi bik jata hai, so make sure you get it as quickly as you can, and I will see all of you there. See you next time.